फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर आशुतोष और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम ये फीटल मेडिसिन के जो अल्ट्रासाउंड्स होते हैं उनको हम कस्टमाइज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट्स, राइट। तो जो प्रीमाइस है फीटल मेडिसिन की वो एक सस्पिशन पे चलती है, पहला। दूसरा ये है कि क्या हम एक्स्ट्रा मतलब व्हाट एक्स्ट्रा दैट वी कैन ऑफर और व्हाट एक्स्ट्रा दैट वी कैन डू ड्यूरिंग दैट रूटीन अल्ट्रासाउंड दैट वी आर डूइंग, राइट। सो रूटीन अल्ट्रासाउंड जैसे हम न्यूक्लियर स्कैन कर रहे हैं, लेवल 1 करते हैं या हम एनोमली स्कैन करते हैं, तो what more that probably we can intend, what more that probably we try to identify at those scans, and whether those the ultrasounds are being customized according to the profile of the patients, meaning thereby that every patient is a high risk patient, no patient is a low risk patient, and तो क्या उसकी customization करते हैं। तो एक बहुत अच्छा केस है जो मैं आपको आज दिखा देता हूँ। लेवल 1 स्कैन है 12 वीक्स पे, ठीक है। सो वी हैव डन द अल्ट्रासाउंड एंड देन इट लुक्स गुड, द बेबी लुक्स गुड, ओके। बट प्रोबब्ली इट वाज अ फिक्स दैट प्रोबब्ली वी आइडेंटिफाइड कि ये जो बेबी की फिंगर्स हैं इन वन ऑफ द हैंड दे आर नॉट मूविंग, ओके। सो मीनिंग देयर बाय दैट इट बिकम्स अ माइक्रोवेव ग्लव जैसा हो जाता है। सो प्रोबब्ली व्हाट वी आर आइडेंटिफाइंग कि थंब अलग दिखता है और चारों फिंगर्स दे आर मूविंग इन अनशन, वो एक साथ ही मूव करती हैं, राइट। सो वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द इंटरडिजिट मूवमेंट्स। सो सस्पिशन ऑफ सिंडैक्टाइली, ये दूसरा हाथ है। तो इसको भी अगर आप ध्यान से देखें तो इवन तो द बेबी इज एक्टिव, ये बेबी मूव करता है, अपने हाथ को घुमाता है, लेकिन हम इसको ऐसा देख पाते हैं कि इंटर डिजिट बेबी की जो फिंगर्स है वो अब एक दूसरे के साथ अलग मूव नहीं कर रही है। सो सस्पिशन ऑफ सिंडैक्टाइली, राइट। तो ये बाइलेटरल हैंड्स में वी आर हैविंग दो सिंडैक्टाइलीज, राइट। सो दिस इज वेरी अर्ली टू टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स एंड देन वी आर सीइंग दिस बेबी एट 12 वीक्स। दिस माइट इवन, सो ये जो पिक्टोरियल डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज फॉर अ डिफरेंट केस, ओके। सो ये इस तरह का ऐसा हो सकता है। Bilateral syndactyly in both the hands. This could be variable. Skin syndactyly could be bony, could be membranous, and which we call as the mitten hands. This could be, even though at this stage at 12 weeks we've identified the bone window, so meaning thereby that we have not identified any the features for a craniosynostosis, right. But this could be a variable features for an Apert syndrome. So Apert is also an autosomal dominant, and it happens, it is an autosomal dominant, and it happens because of the advanced paternal age, right. So the father's age, whenever it is greater than 38, we identified it to be advanced, right, and therefore an autosomal dominant sort of an conditions they can happen. They are more frequent whenever there is an advanced paternal age, which is happening in our case, right. So therefore we are not intending to see this syndactyly, and probably we would make a confirmation of the diagnosis something on 16 weeks, but probably therefore we have gone in depth and then we have written that probably this could be a syndactyly. This is what we are seeing at 12 weeks. So definitely this is just a provisional diagnosis. We would wish to confirm on ultrasound at something around 3 weeks down the line, and if need be arise, we would do the amniocentesis and some FGFR2 mutation analysis, and then probably we'll identify this craniosynostosis, and then all these things for an Apert syndrome, and all these things they might evolve over the period of time as the baby would go further ahead, and then the baby would mature, and baby would grow bigger, and our target grows bigger, and we would be in a better placed situation so as to identify, and we would be very, very specific about what we are talking, right. So this is how a syndactyly, normally what we can see is that the baby is very active, and then probably we can identify this 12 weeks becomes a very good time and ideal time of identifying this polydactyly, because baby अपने हाथों को पूरा खोल के रखता है और आप उनके डिजिट्स को बहुत अच्छे से नाप सकते हो, और वो इंटर डिजिट मूवमेंट में हमको दिखती है बहुत अच्छे से। So there is no big fight in so as not to see the interdigit space and then the movement of the digit in between, right. Okay, so this was something that probably we were not comfortable with, and therefore we have written it on to the report, and therefore we have conveyed all these things to the patients also, and we have asked them to come back again after 2 weeks, 2.5 and 3 weeks, and therefore we'll just put the scan and we'll put the just ultrasound probe onto the fetus, and we'll try to confirm whatever our suspicion is at 12 weeks, right. Thank you very much for your patient listening.